Hello, good morning, students. Today we are starting last chapter of your Indian economic development book, that is Development Experience of India, पाकिस्तान चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। इस चैप्टर में हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है इंडिया चाइना और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट और कॉमन सक्सेस स्टोरी क्या रही है इंडिया और पाकिस्तान की, वो डिस्कस करना है। First topic is strategy of growth of India, China and Pakistan. After independence 1947, Pakistan and India adopted almost a similar strategy of growth. पाकिस्तान और इंडिया का जो growth strategy था वो same था. Means it was a mixed economy model of growth. The strategy of growth underlined the significance of both private and public sector. Public sector was assigned the key role of kick-starting the process of growth and private sector was assigned the secondary role of pushing the process of growth. ये पाकिस्तान ने भी ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी और चाइना ने भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की थी। वाई वॉज द पब्लिक सेक्टर असाइन द की रोल? ऐसा क्यों हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या जो पब्लिक सेक्टर है इसको ज़्यादा बड़ा की रोल दिया गया, मीन्स मेन रोल इन्हीं का रहा। सो द रीजन इज दैट पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैज रेंडर्ड बोथ द इकोनॉमीज एज लैगर्ड इकोनॉमीज और बैकवर्ड इकोनॉमीज। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इकोनॉमीज बैकवर्ड इकोनॉमीज हो गई थी। अब इनको ज़रूरत थी एक बुक पुश की, बिग इन्वेस्टमेंट की, वो पब्लिक सेक्टर से ही मिल सकता था। बोथ द economies needed a big push of investment, only the government could afford it. China, on the other hand, adopted a more rigorous model of growth established as a People Republic of China in 1949. It decided to bring all critical areas of production activity under the government control. National resources was declared a government monopoly. जो चाइना था सारा जो क्रिटिकल प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दी गई थी। इट इज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग अ क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। द चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ इन विच ऑनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट एंड द स्टेट वॉज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। द कॉमन एलिमेंट स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अडॉप्टेड बाय चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एज अंडर। अब इन तीनों की जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसमें कॉमन क्या था कि all the countries relies on public sector as the core sector of the economy। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर था कि तीनों जो कंट्रीज हैं वो एक पब्लिक सेक्टर के ऊपर मेनली डिपेंडेंट थी ग्रोथ के लिए। द थ्री इकोनॉमीज बेसिकली एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। इट फोकस प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंसुलेटिंग फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। और तीनों ही कंट्रीज ने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ओवर time the strategy of growth has undergone a significant change in India and Pakistan। अब धीमे धीमे वैसे तो ये सारी कंट्रीज जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना हैं ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर रही थी, पर धीमे धीमे जैसे जैसे आगे ग्रोथ स्ट्रेटेजी बढ़ी तो कुछ चेंजेस आए इंडिया और पाकिस्तान में। जैसे कि द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ रिलाइंग ऑन द मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यूज टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, but it is one which assign after greater importance to the private sector rather than public sector. Now the model of growth is the one which assign greater importance to the foreign direct investment rather than domestic investment. It is owing to change in the strategy of growth that all the three economies have succeeded in achieving the breakthrough in the growth path. Thus the GDP growth has taken substantial jump in the economies of India, Pakistan and China. The structure of growth has recorded a significant transformation and the demographic profile is being rewritten and human development index has broken its stagnation. सेकेंड टॉपिक इज कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब ये जो कंपैरिजन करना है तीनों कंट्रीज में वो 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे करना है। ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। चाइना की बात करते हैं। इन 2017 जीडीपी इन चाइना वॉज एस्टिमेटेड टू बी 12.40 trillion US dollar. It has achieved distinction in the second largest economy in the world. Between 1979 and 2015, average annual GDP was estimated to about 9%. GDP reached its peak in 15% in 1984, and it touched the bottom 3% in 1990. In 2017, its GDP was about 6.9%. China achieved breakthrough in GDP growth in early 1980s. The jump has been indeed been very substantial from about 4% per annum to nearly 10% per annum. The breakthrough is attributed due to the following factors. ये जो breakthrough आया है ना 1980s में GDP में चाइना में, ये किस कारणों से आया है? It is due to shift from central planned economy to the market economy, focus on export related domestic production, availability of
cheap labor force, giving China a comparative cost advantage, and great leap forward campaign launched in 1958. Quantum jump in FDI was achieved due to the following steps. China established special economic zones. These zones offered all the basic amenities to the investors. कुछ special economic zones बनाए गए थे चाइना में, जहाँ इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं इन्वेस्टर्स तो उनको बेसिक कम्युनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी. 100% इक्विटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई इन द रिटेल सेक्टर वर द टाइपिकली इंड्यूसमेंट पैरामीटर फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर. अ जंप इन जीडीपी ग्रोथ वाज अचीव नॉट ओनली थ्रू एफडीआई बट ऑल्सो थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ावा नहीं दिया गया या इंड्यूसमेंट नहीं दिया गया चाइना में, उसके अलावा चाइना में जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी वर्क किया गया है. रिलाइंग ऑन बेसिकली ऑन एक्सटर्नल डिमांड, चाइना एक्सेप्टेड अचीव्ड अ रिकॉर्ड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड बाय 2020 इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल मार्केट. However, in the recent 2015, 16 and 2016-17, GDP growth in China has slowed down due to the following reason like slowdown in the global economy. सारी ही economies जो Chinese product use करती थी उन्होंने उसकी डिमांड को कम कर दिया है, तो GDP में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे डिक्रीज हुआ है GDP. Growth of domestic demand in China is slowing down. Corruption and economic crime have tended to be rise over time. Chinese people are now exploring higher wage opportunities of employment. And that's why they migrated to rest of the world, and Chinese government is battling with the problem of environmental degradation, which has led to the serious challenge of sustainable. Move to the growth story of India. In 2017, GDP of India was estimated to be 2,439 trillion US dollars. Between the year 1951 to 2017, Indian economy achieved the average annual growth of 5%. The GDP growth of India showed a substantial rise after 1991. जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी ना, उसके बाद चेंजेस देखने को मिला है जीडीपी में. A massive shift towards privatization and a transformation towards liberalization, greater reliance on export promotion rather than import substitution, and greater reliance on FDI rather than domestic investment. NAP, which is said as New Economic Policy, has focused on greater integration of domestic economy with the global economies on the basis of free play of market forces. It was due to new economic policy between the period 1991 and 2017, GDP growth rate in India increased to around 7%. Slowdown in GDP growth is attributed to several factors, notably the following: high rate of inflation, which led to high rate of interest and therefore low investment, and policy paralysis, lack of will to take policy decision of the government owing to political instability, frequent scams and scandals which tarnished the image of the government and led to the market pessimism. Drought of FDI owing to poor credit rating of the Indian economy. The slowdown of the Indian economy marked with scams and scandals led to the fall of the government. Now let's move to the growth story of Pakistan. Pakistan की बात करते हैं. In 2017, in GDP of Pakistan was estimated to be 271 means 271.1 billion USD, or we can say that US dollar. Pakistan economy recorded an average annual growth rate of about 4% between the 1960 to 61. और इंडिया का अगर कंपैरिजन करेंगे 1960 टू 2017, बट अगर हम इसी टाइम पीरियड में इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज कितनी है 5.9%. पाकिस्तान अचीव ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 80s. इट वॉज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन एफडीआई एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. Economic reforms in Pakistan were almost similar to those in India, but from beginning of 2008, economic outlook in Pakistan turned to be disappointing. It attributes the following factors like Pakistan has been gripped by the war of terror. Main problem तो terrorism की है. It has eroded business confidence of the domestic as well as foreign investors. और ये इकोनॉमिक टेरर, ये जो टेरर है ना, वार ऑफ टेरर, इसकी वजह से ही वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से. अब जब इन्वेस्टमेंट श्रिंक होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी तो कम हो गई. करप्शन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वर अदर फैक्टर्स significantly contributing to economic stagnation of Pakistan economy or economy of Pakistan. Owing to the slow GDP growth and consequently the low level of income, the Pakistan economy has almost shrunk into the low income, low growth
trap. So conclusion is that China has outspaced both India and Pakistan with regard to GDP growth. India has performed better than Pakistan, but compared with China, India is way behind. The relative success of China is created to the political stability. Besides, China has shown a strong political will to use national resources in the best interest of the nation. Next topic is the structure of growth. Let's we discuss the growth of India, Pakistan and China. Here a table is given, means all the economies work in the primary sector, secondary sector and tertiary sector. ये तो हमें पता है. टेबल नंबर 1 को हम देखते हैं सबसे पहले. परसेंट शेयर इन जीडीपी इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और फिर परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट में कंपेयर करते हैं. इंडिया का देखिए प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी का शेयर है 15%, और जबकि पाकिस्तान का है 24% और चाइना का है 7.9%. सेकेंडरी सेक्टर का 23%, पाकिस्तान में 19%, चाइना में 40%. टर्शरी सेक्टर का इंडिया में रोल है, शेयर इन जीडीपी है 61%, पाकिस्तान में 56% और चाइना में 51%. अब ऐसे ही कंपेयर करते हैं शेयर इन एम्प्लॉयमेंट. 47% ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, 22% ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड 31% ऑफ टर्शरी सेक्टर. मीन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है. पाकिस्तान में 42% इन प्राइमरी, 22% इन सेकेंडरी, इन टर्शरी इज अबाउट 35%. लेट्स वी डिस्कस टू चाइना. 27% of primary sector given employment to the persons, and secondary sector about 28%, and tertiary sector about 43%. So this table, what we have observed after watching or after reading this table is that all the three countries have emerged, has experienced a noticeable structural transformation. No longer primary sector is the principal contribution to the GDP. And in terms of sectoral contribution to GDP, economies of India and Pakistan are now relying more on tertiary sector, while the economy of China is relying more on the secondary sector. Experience of China in this respect is like the experience of most developed countries of the world. Historical experience of the developed countries shows that in terms of percentage share in GDP, it was the first secondary sector, later the tertiary sector, which emerged as a leading sector of the economy. Experience of India and Pakistan shows a major shift directly from primary to the tertiary sector, which implies lesser emphasis have been given to the industrial expansion. Expansion of service sector in India and Pakistan is owing to fast integration of the economies with the global economies. In terms of employment, अगर हम employment की बात करते हैं, the shift from primary to secondary and tertiary sector has not been significant in India as in China and Pakistan. India has virtually failed in this respect. People in India have stuck to the primary activities despite of substantial reduction in percentage contribution of this sector in GDP. जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का या प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम शेयर है, उसके बाद भी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा चिपके हुए हैं इंडिया में. यही इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है. सजेस्टिंग द फैक्ट दैट एज वाइल there has been a substantial increase in output outside agriculture, there has not been a proportionate increase in employment opportunities. Outside agriculture, increase in output to be explained more in terms of increase in productivity rather than increase in employment. This is like an economy slipping into the jobless growth process. Let's we discuss the demographic profile of all three countries. Table number 2 is given here, in which estimated population in million is given. India 12.10, in China 1339 and Pakistan 176. Means China is the populated country among all three countries. Annual growth of population 1.76 in India, China 0.47, Pakistan 1.8. Density per square kilometer 382, 143 and 225. Sex ratio भी दिया गया है, urbanization भी दिया गया है. Table 2 shows that India and China together are habitant of for 38% of the world population. पूरे world की 38% population इंडिया और चाइना में रहती है. India with a little more than 1.2 billion people is habitat for the nearly 18% of the world population. China with nearly 1.34 billion people is the habitat for the nearly 20% of the world population. In comparison, Pakistan is a small country. Its population is just 1/10 of China or India. Both India and China are large in size of population. It is a hindrance in the process of growth and it requires huge amount of maintenance and investment. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो population explosion है growth process के लिए. इसीलिए जो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया. वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन 1979. इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल परस्यूड. कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विच वॉज नियरली 1.33% in 1979 has now been reduced to 0.47%
per annum. It's containing its population growth rates. China is now focused on the quality of life rather than sustenance of life. Growth rate of population continues to be high here in India. It is an alarmingly high in Pakistan. It is feared that existing rate of growth, population size India may soon exceed the China. अगर ऐसा ही growth rate इंडिया में चलता रहा तो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा इंडिया. China has low density of population compared with India and Pakistan. It is because very large geographical area of China than India and Pakistan. It is estimated to be 1.43 person per square kilometer in China compared to 382 and 225 person per square kilometer in India and Pakistan. जो पर स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सनस की अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 143% रहते हैं चाइना में, पर इंडिया में 382 और पाकिस्तान में 225. Other things remaining constant, lower density employs lesser stress on the country's natural resources and raising its ability for sustainable development. Both Pakistan and China are showing brighter signs of urbanization than India. Urbanization is closely linked with structural transformation in India. It is consequent shift of working force from agriculture to industries and services. India में 31% population is urbanized in compared to 51% in China and 37% in Pakistan. इसमें इंडिया पीछे है urbanization में. Sex ratio की बात की जाए, it is estimated to be 940 and 950 and 952 for India, China and Pakistan. For India 940, for Pakistan 952 and for China 950. This is the number of female per 1000 male of the country. Lower the sex ratio points the social backwardness. Female foeticide is the principal cause of low sex ratio. Next topic is human development. Human development की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बात करते हैं तो वो हायर होना चाहिए. एडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लो होना चाहिए. एडल्ट लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए कंट्रीज की. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट lower the better. Material mortality rate lower the better. Percentage of population having access improved water sources higher the better. एक इन्होंने डाटा दे दिया गया है कि क्या बेटर रहेगा और क्या लोअर, कौन सी रेट लोअर बेटर रहेगी और कौन सी रेट हायर बेटर रहेगी. अब इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर हम सारे कंट्रीज को कंपेयर करें, इन द ईयर 2017 HDI Human Development Index for China, India and Pakistan was estimated about 0.75 to 0.640 and 0.562. Higher HDI ranking China is mainly due to large GDP per capita income. China has also performed better with regard to the infant mortality rate and material mortality rate. Infant mortality rate is just low as 11.8 per thousand in China compared to 37% per thousand in India and 50 per thousand in Pakistan. As regard access to improved sanitation, again China shows better performance. 76% of the population access to be improved sanitation compared to 39% in India and 63% in Pakistan. In the provision of improved water sources, Pakistan has performed better than India and China. In Pakistan, 91% of the population has access to improved source of water compared with 94% in India and 95% in China. Now let's move to the next topic, that is common success story of India, Pakistan and China. Both India and Pakistan have succeeded in more than doubling their per capita income. The incidence of absolute poverty has been reduced significantly, although the number below poverty line continues to be very large. Food production has successfully kept pace with the rise of population. Population जिस तरह से, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. सेल्फ सफिशिएंट, बोथ कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड. फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज़ बीन अकम्पेन्ड विद द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस. जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, फूड सेल्फ सफिशिएंसी के साथ न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. बट हेयर सम कॉमन फेल्योर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर दैट द रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक policy and high protection to the domestic industry did not allow India and Pakistan to take timely advantage of globalization. जो प्रोटेक्शन दी गई है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, उसके कारण ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट इन कंट्रीज ये को नहीं मिल पा रहा है. ये कंट्रीज टाइमली एडवांटेज नहीं ले पा रही ग्लोबलाइजेशन का. द माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियन हैज़ नॉट शोन प्रोग्रेसिव चेंजेस. प्राइवेट सेक्टर हैज़ थ्राइव्ड मोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राइब्स एंड लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Tax evasion is a national hobby. Fiscal management is grossly disappointing. Higher fiscal deficit averaging 7 to 8% of the GDP has persisted for a fairly long period of time. These are the following failures or common failures of the India and Pakistan.
अगर हम अर्बन सर्विसेज की बात करें तो वो भी उतनी प्रॉपर नहीं है दोनों कंट्रीज़ में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान. इन द following points may be noted in this regard. In the area of skilled manpower and research and development institution, India is better than Pakistan. India has shown a remarkable breakthrough in the export of software after economic reform in 1991. पाकिस्तान अभी भी इनमें पीछे है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी इंडिया काफ़ी आगे है in comparison to Pakistan. Indian scientists excel in the areas of defense technology, space research, electronics, telecommunication. Pakistan is still now lag behind. The number of PhDs produced in India in science and engineering every year about 5,000, which is higher than PhDs in Pakistan. तो पाकिस्तान अभी भी इन एरियाज़ में, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें या फर्टिलिटी रेट या पॉपुलेशन रेट की बात करें, तो अभी भी इंडिया से पीछे ही है पाकिस्तान. मतलब इंडिया आगे है और पाकिस्तान पीछे. इंडिया हैज़ ऑल्सो अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑल्सो. अगर हम जो मेन टॉपिक है एजुकेशन की बात करें, फीमेल लिटरेसी की बात करें या अडल्ट लिटरेसी की बात करें या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें, तो इनमें भी इंडिया आगे है और पाकिस्तान पीछे है. हेल्थ इश्यूज़ में भी यही है. एरियाज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया. अब ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहां पाकिस्तान आगे है बट इंडिया पीछे है? स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ अचीव बेटर रिजल्ट विथ रिगार्ड ऑफ माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर to rural peoples, and by reducing BPL population to 29% of the total, contrasting with India 21%. जो BPL population reduce हुई है पाकिस्तान में वो 29% है, पर इंडिया में वो अभी कितनी है? 21%. यहाँ इंडिया पीछे है पाकिस्तान से. External trade has expanded much faster in Pakistan than India. Even when the rate of investment in Pakistan has been lower, in India efficiency of investment has been not very higher. Pakistan has achieved better result as regard to improved in the water resources. सबसे अच्छा तो वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान का ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड चाइना. और अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो सेम कंडीशन वहाँ भी रहेगी. पाकिस्तान इज़ बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट इन वाटर रिसोर्सेज देन इंडिया. Now the last topic of this chapter, where the China edges over India. The Chinese reform process began more comprehensively during the 80s when the India was in midstream of slow growth of process. Even when the reform process was actively pursued in 90s, India focused more on GDP, contrasting with China's initiative focus on poverty alleviation. चाइना जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस कर रहा था और इंडिया सिर्फ अपनी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पे ही वर्क कर रहा था. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द चाइनीज एग्रीकल्चर वेंट अ लॉन्ग अवे. इट abolished कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग. Instead household were allotted land for industrial cultivation, though the ownership of land remained with the state. This brought the radical transformation in agriculture. एग्रीकल्चर में क्या किया चाइना में कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया. उसके लिए जो ऑनर था ज़मीन का, हाउस होल्ड नहीं था, स्टेट ही था, मीन्स गवर्नमेंट ही ऑनर था, बट उसने हाउस होल्ड्स को दे दिया था प्रोडक्शन करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए. उसी से सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ चाइना में एग्रीकल्चर का. इन इंडिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैव बीन फार लेस इफेक्टिव देन इन चाइना. Also, global exposure of the economy has been far more wider and in China than India. China allowed foreign investors 100% equity investment. It has allowed foreign investors freedom to hire and fire the workers. By establishing SEZ, Special Economic Zone, it offered lucrative infrastructural facilities for the foreign investors, and China was liberal in allowing FDI in retail. ये सारे benefits थे जो चाइना ने इन foreign investors को दिए थे, इसलिए वहाँ global investors ज़्यादा आए चाइना में. In all these respects, India remained far behind. As a matter of fact, India has been providing protection of labor-intensive segments of the economy. It is owing to these factors that China has emerged as the second largest economy in the world in terms of its percentage share in global GDP, while India is lagging way behind. यही कारण है कि चाइना जो आगे रह गया और इंडिया, जबकि इंडिया में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, फिर भी चाइना ने एग्रीकल्चर में भी उसको टुक ओवर कर लिया, मीन्स आगे बढ़ गया उससे.